So as in previous class, we were ended our session at principle of NMR spectroscopy. So whatever the principle of NMR spectroscopy is there, that principle is very, very important one to know how our NMR spectra is working, or with what point of view NMR spectroscopy is working. Now, see, whenever this NMR spectroscopy is there, as in previous class, I told you about omega, that is nothing but the angular precessional velocity, and then after H0, which is about applied field in the Gauss, म्हणजेच की जी काही तुम्ही applied magnetic field apply करत असतात ती field, and the gamma is nothing but the gyromagnetic ratio. Now, as I told you as in previous session, that is about whatever the fundamental NMR frequency is there, that fundamental NMR equation we can derive by the frequency relationship of our electromagnetic radiation. And how we can derive it, that I'll tell you by using whiteboard, and then after we will go towards simply NMR का ओरिजिन कैसे होता है, उसके ओरिएंटेशन क्या होते हैं, एनएमआर के कौन से एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, ये सारा का सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर चुके हैं. हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो केमिकल शिफ्ट, shielding, de-shielding, then after one point is left, which is known as like how many number of spectral lines you can have in our spectra, that we will learn in our next class. But before going towards anything, I would like to tell you whatever the info is there, which is about the principle, and that about simply omega. What is mean by omega? What is mean by omega? With the help of board, I'm trying to tell you. So see, whenever you have omega at that time, whenever you have omega at that time, omega is equals to the gamma into h nu. What is this, beta? This is nothing but the gamma. Now you may ask me, ma'am, what is mean by omega, what is mean by gamma, and what is mean by h0? Omega is nothing but the angular precessional velocity. What is omega? Omega is nothing but angular precessional velocity. Then after, h0 is nothing but applied field. H0 is nothing but the applied field in the Gauss. Applied field in the Gauss. And also H is about gyromagnetic ratio. What about gyromagnetic ratio, where I'm not going to write this what is mean by this H0, because I taught you already in my previous class what is mean by omega. Omega is nothing but the angular precessional velocity, and H0 means applied field, which is measured in the Gauss. See, listen carefully everyone. Whenever we deal with the H0 in examination, they may ask you a question, applied magnetic field or applied field is measured in, that may be given in the terms of H0, or that might be given in B0 notation. See, literature to literature आप जैसे वैरी करोगे तब आपको कुछ लिटरेचर में मिलेगा H0 और कुछ लिटरेचर डेटा में आपको मिलेगा B0. What is that H0? H0 is nothing but applied field. Now, I think everyone must be clear with the terms which are involved in our equation. So we can cause this equation, present equation is equation number 1. And now from this equation, as we can know, or as we can do one thing, that is about gamma. And we can put up the value of gamma in our above equation. But before that, means this gamma value, what is this gamma value? We should know. Why? Because we should know this value, because ये जो कुछ भी gyromagnetic ratio है, on to the dependency of gyromagnetic ratio, that is, ये जो कुछ भी आपकी न्यू मतलब की फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी is equals to, I'll write up the equation and we'll try to explain. That is, nu is equals to simply gamma into H0 upon gamma into H0 upon 2 pi, and or you can rewrite this equation like gamma into H0. Wait a minute, I'll show it by
another color. So gamma into H0. Now what do we want? What do we want? In this equation we have, in this equation means in the equation number 1 we have omega is equals to simply, what is that beta? Gamma into H0. So that gamma into H0, that gamma into H0 is equals to omega. So now from present one equation of nu, that is nothing but the frequency, and whatever this frequency is there, that is equals to, as we know and as we can derive this equation, but this we are not dealing with this equation because it is none of our business. But if you want to go in details, I'll send you all the equation part on my Google Classroom. Don't you worry at all. Now, whatever this gamma in wait, I'll change the pen. So from this equation, gamma into H0 as we have, and that is equals to, what can we rewrite? This nu into 2 pi is at the downside of our equation, डिनोमिनेटर में का वैल्यू अब क्या होगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड को जाके न्यू इंटू 2 पाई हो जाएगा. अब ये जो कुछ भी हमें वैल्यू मिल चुकी है, दिस वैल्यू इज अबाउट व्हाट, गामा इनटू H0. नाउ can you look towards the equation number 1? Yes, we can see or we can reveal from the equation number 1. And what's that? That is nothing but gamma into H0 is equals to omega, and the next equation is gamma into H0. Can I rewrite this from the present one equation to this equation? I can name it as, or we can name it as equation number 2. So from these equations we can have as like one side of these equations are same. It means that can we equate other remaining sides? So what is its answer? Its answer is yes or no. I'm expecting from you. What's that? Yes, absolutely. We can just simply equate these both of values, and after equating both of these values, what can we get there? We can get there, wait a minute, where should I write? पाहते मी स्क्रीन छोटी होते का. I can't minimize the screen, so simply मैं क्या करती हूँ, स्क्रीन को horizontal करा के देखती हूँ होता है क्या. Wait, हाँ. That's okay. चलो. Now या इक्वेशनची लेफ्ट हँड साइड काय, ओमेगा, आणि ह्या इक्वेशनची सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय मीच करते. So from this from the present one equation, and now what we got there? We got there nu is equals to, this is nu, huh? Not gamma. Gamma into H0 upon 2 pi. We can rewrite this equation as this 2 pi will go at this side, and we can write up 2 pi nu is equals to gamma into H0. And we can cause this equation as equation number 2. And from the present one equation number 1 and equation number 2, from the present one equation number 1 and equation number 2, we can simply write the their RHS values, means right hand side values are simply same, they are same. Now when their right hand sides are equal, then we can write up their LHS values equal. So what do I mean? I mean to say omega is equals to, sorry, थोड़ी bright pen झाली. Omega is equals to 2 pi nu. Omega is equals to what? 2 pi nu. And now what is this? This is nothing but the omega is nothing but what I told you just now and in my previous class. What is that? It is nothing but
angular precessional velocity. What is that? Angular precessional velocity. Omega is what? Angular precessional velocity. So whatever this angular precessional velocity is there, this angular precessional velocity, which can be defined as the number of revolutions per second which are made by the magnetic moment vector of your nucleus, which is around the external magnetic field H0 or B0. Some literature data may give you it is as H0 and some as B0, as I told you already. Now, ये जो कुछ भी हमारे मैग्नेट्स होते हैं, स्पिनिंग मैग्नेट्स होते हैं, आई थिंक नाउ यू गाइज आर प्रीटी क्लियर विद व्हाट इज मीन बाय angular precessional velocity. What is mean by angular precessional velocity value? And it is nothing but the number of revolutions per second which are made by magnetic moment vector of the nucleus. मतलब क्या, ये थोड़ा सा अगर वर्ड में हम समझाने जाए ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. मुझे लगता है ये स्लाइड आपको क्लियर हो चुकी होगी. मैं अनदर स्लाइड लोड करती हूँ, रुको. हाँ. व्हाइट बोर्ड दिसतोय? यस. सो व्हाट्स दैट? मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी समजून घ्या, कारण प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी फार महत्वाची आहे. तुम्ही असं बिलकुल समजू नका की थर्ड इयरला पण एनएमआर झाला, मग आता एमएससी फर्स्टला पण एनएमआर आहे आणि मग एमएससी सेकंड इयरला पण आपल्याला एनएमआर आहे, म्हणजे एनएमआर एकदा वाचला की सोपा झाला असं नाही. इथे तुम्हाला फिजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी एनएमआर शिकायचा आहे. थर्ड इयरला इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू मध्ये तुम्ही शिकलाय आणि एमएससी सेकंड इयरला तुम्ही खूप डेप्थ मध्ये शिकणार आहात, आणि त्यानंतर तुम्ही कुठेही इंटरव्ह्यूला गेलात तर तुम्हाला त्यावरती क्वेश्चन्स नक्की म्हणजे नक्की विचारणार. आणि you should be able to understood all the basic criteria, because in the interview में वो लोग कुछ भी डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछते, बेसिक बिहाइंड एनी चैप्टर वो पूछते, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ. चलिए आइए, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मतलब आपका एक आध न्यूक्लियाई है, सपोज ये न्यूक्लियाई ऐसे इस एक्सिस की तरफ ऐसे घूम रहा है, okay, and when it is moving, I mean to say revolving per second, एक सेकेंड में वो आपने जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई की है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो कितने नंबर ऑफ टाइम वो घूमता है with towards that nucleus and in the presence of external magnetic field, इसी को हम बोलते हैं ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी. अब ये जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है, ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बोला था कि ये जो कुछ भी हमारे दो मैग्नेट्स होते हैं, एक इसका पोल होता है नॉर्थ और इसका सेकंड पोल होता है साउथ. एंड एज आई टोल्ड यू मेनी एंड मेनी टाइम्स, दिस बार this spinning nuclei is it can be anywhere, like what, like it is in random motion when it is in the absence of external magnetic field, in the absence of external magnetic field. But when you are applying the radio waves, then you are applying the radio waves, या फिर आप बोल सकते हो उसको, क्यों रेडियो वेव्स बोल रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से हम कौन से क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं हमारे इस स्पेसिफिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो उसका आंसर है रेडियो वेव्स. उसका आंसर क्या है? रेडियो वेव्स. देखिए और ये रेडियो वेव्स कौन सी रेंज में होते हैं? माइक्रोवेव रेंज में होते हैं. कौन सी रेंज में ये प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोवेव रेंज में. ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मच डिटेल्स ऑफ दैट रेडियो सॉरी, ईएसआर मध्ये आपण मायक्रोवेव्ह वापरतो, इथे रेडिओ वेव्स वापरतो. देन सी, ये जो कुछ भी आपके रेडियो वेव्स आर दिया, दिस रेडियो वेव्स आर मेजर्ड इन दी मेगा cycles per second. What do I mean by mega cycles per second?
I do mean by my sentence is simply mega means M, not any girl. It's M is mega hertz cycles per second. What is that? Cycle per second is nothing but the definition of your frequency. मतलब हम बचपन से मतलब बहुत 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, एक पॉइंट में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स या फिर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टाइम मोशन होती है आपके इस न्यूक्लियाई की, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड गिनना। साइकिल पर सेकंड गिनना मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। एंड दैट I mean by that cycle per second, मेगा साइकिल्स पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो, CPS लिखती हूँ मैं, साइकिल्स पर सेकेंड, बट मेगा साइकिल्स पर सेकेंड के बाद में अब बात आती है हमारे यहाँ पर किस चीज की, यहाँ पर बात आती है कि, एक मिनट, हाँ, यस, मेगा साइकिल पर सेकंड मतलब कि frequency का unit is hertz, and I'm writing it here. Means what do we get here? We got here what is the unit of our applied radio frequency. applied radio frequency मतलब रेडिओ वेव्हची जी काही तुमची फ्रिक्वेन्सी असते त्याचं जे काही युनिट आहे तुमचं मोजायचं, व्हॉट इज दॅट बेटा, इट इज नथिंग बट द मेगा हर्ट्ज. नीट लक्षात घ्या, बिलकुल कन्फ्युज होऊ नका. ह्या छोट्या छोट्या क्वेश्चन्स वरती तुमचे इंटरव्ह्यूज किंवा तुमचे वायवॉस डिपेंडंट असतात. ओके, आय थिंक विथ दिस यू गाईज आर क्लिअर. येस और नो? If no, then tell me. I'm ready to explain you again. Yes, guys. आणि एकदा 4:50 झाले की मला लक्षात करून द्या. Are you guys clear? अरे आवाज येतोय ना? Yes, ma'am. येतोय ना आवाज? समजलं एवढं? And this is all about simply principle of NMR spectroscopy. Now you may ask me, ma'am, you told, एक बात बताने की रह गई यहाँ पे, और आप लोगों ने नोट भी नहीं किया, वो क्या है वो बोलती हूँ. देखिए, ये इन द absence of external magnetic field बोला था मैंने, but in the presence of external magnetic field, again and again I am telling you, in the presence of external magnetic field मतलब जब आप external magnetic field अप्लाई करते हो तब, अब पहले जब external magnetic field नहीं रहती है तब वो कैसे भी किसी भी पोजीशन में, मतलब मुझे बोलना है कि किसी भी रैंडम स्टेट में हो सकते हैं, but once you apply this external magnetic field, then what happens, then they do align, with the external magnetic field or opposite to the external magnetic field. What do I mean by this? That you are clear, because आप लोगों ने इससे पहले की सारे देखे हैं और मैं वो ही चीज बार बार रिपीट नहीं करने वाली हूँ. अब इसको जैसे कि मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ प्लस, और यहाँ पर अगर से वो आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम बोल सकते हैं माइनस, प्लस एंड द माइनस. व्हाट डू आई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस. वेट, minus. Plus is for this with the applied external magnetic field aligning with this field, aligning with the external magnetic field and opposite to the external magnetic field. अब आप लोगों को इससे पहले वाले मेरे सारे क्लासेस का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा. अब मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका है. अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ओह शिट, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ एनएमआर, मतलब हम एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो मैंने बोला था उसी को बोलते हैं हम एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई. अब उस एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में ये जो कुछ भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, अब किसकी फ्रीक्वेंसी, आपके न्यूक्लियाई की. कौन से न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके ये एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो जब मूव करते हैं तब उनकी जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज लार्मर frequency. What type of frequency it
it is Larmor frequency, and this spectroscopy is put forth in front of us by Purcell and Bloch, who put forth Purcell and Bloch. So whatever these two scientists are there, they put forth or they stated us info regarding NMR. Now all these things are ready in towards me in what that format, PDF PPT format, sorry, that I'll be showing you. But before that, it's my duty to explain you everything. Now, as we know very well, simply gamma is nu is equals to क्या होता है? अभी अभी हमने बोला nu is equals to क्या होता है? एक तो nu is equals to gamma into h0. न्यू वैल्यू हमें जो कुछ भी न्यू वैल्यू है वो न्यू वैल्यू हमारी न्यू वैल्यू इज गामा इंटू h0 अपॉन 2 पाई अपॉन व्हाट 2 पाई, एंड ये जो कुछ भी हमारी न्यू वैल्यू है दैट इज नथिंग बट गामा इंटू h0 अपॉन 2 पाई. यही हमें क्या बताती है कि थोड़ी देर पहले का ये इक्वेशन याद करो आप लोग. What was that? That was gamma into h0. We equated this from equation number 2, and now in this equation whatever this nu is there, this nu is nothing but the frequency, and whatever that frequency is there, that frequency is in terms of cycles per second. That frequency is come in the terms of cycles per सेकेंड. एंड अब ये जो कुछ भी हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अब इसके बाद में हमें कितने लाइंस मिलते हैं, मतलब कि मोड ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स, मतलब कि कौन से न्यूक्लियाई एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्या होता है, ये कुछ अब हम लर्न करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए मेरे पास जो स्लाइड्स है मैं उनकी हेल्प लूंगी सो दैट आप लोग भी अच्छे से उसको इमेजिन कर सको, आप लोग समझ सको उस चीज को. स्लाइड दिख रही है आपको? यस. सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कल के क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, उसमें कैसे आपके स्प्लिट होते हैं लाइंस ये पढ़ा था, और थ्योरी ऑफ एनएमआर में पढ़ा था हमने कौन से एक्टिव न्यूक्लियाइज होते हैं. देन आफ्टर एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मेरे पास एक स्लाइड है, वेट अ मिनट. यस, वेट, इससे पहले ठीक है, एक स्लाइड लोड करनी है मुझे. Yes, what I taught you just now. Purcell and the Bloch, right? Who discovered NMR? NMR was discovered by Bloch and the Purcell. In the year 1952, they got Nobel Prize. Guys, getting importance of this NMR spectroscopy. This might be hectic for you, क्योंकि आप लोगों को इसके डेप्थ में आप जितना जाओगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक जॉब होते हैं. आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के स्पेसिफिक सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है. चलिए अब मैं दूसरी स्लाइड लोड करती हूँ. जस्ट मुझे ये दिखाना था, ये दो साइंटिस्ट थे जिनको की सॉरी, mistakenly I shared whiteboard. Yes. So whatever this NMR spectroscopy is there, this NMR spectroscopy is having the different 6 parts. Whatever this different 6 parts are there, these 6 parts are about your sample holder, then the permanent magnet, then wait, I'm using pen. हाँ, then sample holder होता है,
परमानेंट मैग्नेट होते हैं, देन मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं, स्वीप जनरेटर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है, एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है। अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैम व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, why should we use this, is there is any use of all this instrumentation? Yes guys, its answer is obviously yes. Why? because ये जो कुछ भी हमारी एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन है, इस एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन से ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे अननोन सैंपल का स्पेक्ट्रा। आई मीन टू से कितने इंटेंसिटीज होंगे हमारे किसी भी अननोन सैंपल में, और उस पर से हम हमारे केमिकल सब्सटेंस का या फिर किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में क्यों हमें एनएमआर पढ़नी चाहिए, उसके क्या एप्लीकेशन है, ये सारा का सारा पार्ट हमने पढ़ा है। तो अब आई एम कमिंग टू द पॉइंट। सी नाउ, ये जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द सैंपल होल्डर। व्हाट इज दैट? sample holder. What is the help, what is the use of this sample holder? Sample holder will hold your sample. What do I mean by this sample holder? मतलब कि ये जो कुछ भी सैंपल होल्डर होता है, इस सैंपल होल्डर में सैंपल हम डालते हैं। अब बात आती है कि एनएमआर एक्टिव जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होने चाहिए। देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ फास्टली आपको सब कुछ समझाने की, हमारे पास टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, देन अगेन coming to the point, what is that sample holder? What is that sample holder? sample holder मतलब आपके सैंपल जो होते हैं उसको आप रखते हो एक कवेट जैसा, आपका ग्लास का मटेरियल होता है। जैसे कि आप लोग कलरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट करते हो, इन कलरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट वॉट एवर द सैंपल होल्डर इज दियर, इट इज मेड ऑफ ग्लास, एंड वैसे ही आपका सैंपल होल्डर होता, वैसे ही मतलब अब थोड़ा सा उसका शेप वगैरह चेंज होता है। बट आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं कलरीमेट्रिक में जो सेल लेते हैं हम उसके जैसे कुवेट, कुवेट बोलते हैं ना, कोई कवेट बोलता है, कोई कुवेट बोलता है, with your convenience you can pronounce it. So see, whatever source is there, that source is containing sample, and then after आप लोग को मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग मैग्नेट रखते हो, मैग्नेट रखते हो, मैग्नेट रखते हो। दिख गया मैग्नेट? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द permanent magnet. What are these? These are nothing but the permanent magnet. What they produce? What they produce? Yes everyone, they produces magnetic field. What they produce? They produce magnetic field, and whatever this magnetic field is produced by these your, बेटा खूपच मी हॉचपॉच केला इथे. Yes, so whatever your these these your magnets are there, and these magnets are completely creating environments or creating magnetic field. And now in the presence of this magnetic field, आप बोलोगे मैम हमें तो आप हमारे न्यूक्लियर ऐसे ऐसे घूम रो नहीं दिख रहे, आप कैसे करें? आप लोगों को एक एक एटम आइज से हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो सब कुछ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप लोग, नहीं तो आप लोग मुझे बाद में पूछोगे कि मैम देयर इज नो वन न्यूक्लियर विच इज लाइक मूविंग हियर और हियर, मतलब कि हियर ऐसे वो मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है, फिर हम कैसे समझे कि वो विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है या फिर अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है? एंड ऑल दिस डेटा is observed with of the simply intensity ratio of your peaks, intensity ratio of your peaks. But before that again you means we have the magnetic coils. देखिए यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? magnetic coils. What is the help of that magnetic coils? The help of the use of this magnetic field is, hello, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, there was call, that's why I asked. So simply ये जो कुछ भी हमारे मैग्नेटिक कॉइल्स है, ये मैग्नेटिक कॉइल्स हमें जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि आप
कि ये क्या बोलते हैं बाबा उसको, रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्यों, क्यों रेडियो फ्रिक्वेंसी? क्योंकि आप यहाँ पर रेडियो वेव्स यूज कर रहे हो, तो रेडियो वेव्स में जो कुछ भी उनके फ्रिक्वेंसीज होते हैं उनके ट्रांसमीटर्स के, वो आप उसको अप्लाई करते हो, मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ दैट रेडियो वेव्स यू आर डूइंग। फिर क्या होता है, सैंपल आपका क्या होगा, सैंपल आपका जस्ट क्या बोलते हैं बाबा उसको, सैंपल आपका वर्कआउट होगा, and then after you can have or you can note it on, there is a one sweep generator, and this sweep generator is generating simply this radio waves, and ये जो कुछ भी मतलब आपको आपके जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से क्रिएट हो, फिर आपके जो कुछ भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज है उन रेडियो फ्रिक्वेंसीज मतलब सारा इनपुट अच्छे से दिया जाए वो देखते हैं, and then after radio frequency transmitter is there. Now you may ask me, ma'am, what is the use of this simply sweep generator? So sweep generator is simply used, और ये जो कुछ भी हमारे कॉइल कॉइल वाले जो ये दिख रहे हैं ना आपको कॉइल्स, ये जो कुछ भी आप लोगों को ये कॉइल्स दिख रहे हैं उनमें जो कुछ भी मैग्नेटिक फेसेस होते हैं उनमें जो कुछ भी अल्ट्रेशन होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल रेंज पे, अब वो क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं विथ द help of these coils, with the help of these coils। and कैसे हम वेरी कर सकते हैं उसको, हम ऑटोमेटिकली उसको विद द हेल्प ऑफ टाइम हमारे करंट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, एंड ये जो चेंज होता है ये हम मेजर कर सकते हैं लीनियर ड्राइव की हेल्प से चार्ट रिकॉर्डर पे, जो जहां पर कि हम अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, ये आप अगर मुझे पूछो कि जनरली हम कौन से मेगाहर्ट्ज का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, तो 60 मेगाहर्ट्ज का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नाउ देखिए, ओनली एंड ओनली 60 मेगाहर्ट्ज का हमारा होता है क्या एनएमआर, तो उसका आंसर है एब्सोल्युटली नो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपीज, and what is the use of that NMR, that 60 megahertz, that 90 100 different different number of ये जो कुछ भी रेडियो वेव्स आप डालते हो उस पर आपके एनएमआर की जो कुछ भी क्या बोलते हैं हम वर्किंग होती है वो वर्किंग डिपेंडेंसी होती है, तो ये जो कुछ भी वर्किंग डिपेंडेंसी होती है तो ये वर्किंग डिपेंडेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड इट इज एक्टिंग और इट इज completely dependent on to the transmitter radio frequency source। किस पर है वो ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, ये देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम देयर इज वन थिंग विच इज लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मीन्स इट इज मेंटेनिंग दैट यूर ऑल द रेडियो फ्रीक्वेंसीज, देन आफ्टर ये जो कुछ भी क्रिएट होंगे इनमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस आर ऑब्जर्व बाय सिंपली योर रिकॉर्डर, सिंपली बाय योर डिटेक्टर, हम बोलेंगे उसको क्या क्या बोलेंगे उसको, डिटेक्टर। अब ये जो कुछ भी फ्रीक्वेंसीज होंगे वो फ्रीक्वेंसीज मतलब कि चेंजेस होंगे वो चेंजेस हम ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पिक्स दिख रहे होंगे, देखिए इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, ऑडियो एम्पलीफायर। व्हाट इज मीन बाय ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर मतलब आपके जो पिक्स है वो पिक्स क्या इंटेंसिटी है, कैसे आ रहे हैं आपके पिक्स, और आपको किस रेंज में स्पेक्ट्रा चाहिए, ये वो लोग आपको पूछते हैं, आपको कुछ एक्सपेक्टेड पिक्स है क्या, या फिर आप लोगों को कुछ मतलब रेंज है क्या आपकी, तो आप लोगों को वो अगर से चाहिए तो आप वो लोग यहाँ से ऑडियो एम्पलीफायर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डिटेक्टर। व्हाट अबाउट डिटेक्टर, अब डिटेक्टर पे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्टर ही होता है डिटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी आपका प्लॉट होता है, क्या होता है बेटा, plot। What is mean by plot, it is nothing but one form of your graph, it is nothing but one form of your graph, and whatever this one form of your graph is there, this one form of your graph is explaining you, this one form of your graph is explaining you about your NMR graph or NMR spectra of your unknown sample। Are you guys clear with the instrumentation part, yes or no? If it is yes, then I would like to move towards the next point, because yes, yes or no,
If it is yes, then tell me. If it is no, then also tell me. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Now, what is mean by न्यूक्लियर रेजोनेंस या फिर क्या होता है रेजोनेंस फेनोमेना? देखिए, जब कभी भी रेजोनेंस होता है मतलब क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लोड करूंगी स्लाइड। और सैचुरेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक मिनट, मैं स्लाइड लोड कर रही हूँ। So before resonance, nuclear resonance, one, they may ask you for your MCQ, and that is what type of solvents you are using in NMR. अब आप लोग may be confused हो सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियर भी होगा ये पॉइंट क्यों और क्या। ये है हमारे सॉल्वेंट्स के बारे में। सॉल्वेंट्स मतलब क्या, जैसे कि मैं एक पॉइंट स्किप हो गया था मैं बोलते बोलते कुछ टाइम पहले कि हमारे ये जो कुछ भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके लिए हमारे जो कुछ भी मतलब स्टेट ऑफ मैटर होती है एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए, उसके लिए कौन सी स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वीनियंट। तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फ्रॉम दिस convenient method is liquid state. Why? Because this method is convenient, that I would like to tell you. बिकॉज सॉलिड स्टेट में जो कुछ भी उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं होते हैं। बट इफ यू लुक टुवर्ड्स द लिक्विड स्टेट, they can be easily soluble in the given liquid, like the solvents which are used, they can be like organic solvent. Now you may ask, why these organic salts we are using only, why not polar solvents we are using? Because non polar मुझे बोलना है, क्यों हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये जो कुछ भी हम सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, यही सॉल्वेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इन सॉल्वेंट्स में, मुझे आप लोग बोलो, कहीं पर भी आप लोगों को प्रोटॉन दिख रहा है क्या? उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है आपको प्रोटॉन, या फिर आप प्रोटॉन कंटेनिंग कोई सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं कर रहे हो? क्योंकि सिंपली कॉमन सेंस है, हम क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी लर्न कर रहे हैं? एनएमआर, मतलब कि प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ही क्या है इसका? मतलब ही ये है कि ये जो कुछ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कुछ भी हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स आप लोगों के जो कुछ भी पिक्स है आपके सैंपल में, वो उसमें इंटरफियर ना करे, इसके लिए हम ये सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि CCl4, CS2, CdCl3, C6D6, नॉट द बेंजीन। देखिए, H is replaced by D. What do I mean by this? हेक्साड्यूटेरेटेड या फिर हेक्सा ड्यूटेरियो benzene, hexadeutero-benzene. Why? Because we are using this, because these do not have your protons. एंड अब आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है, ये जो कुछ भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, किसमें? इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कुछ भी एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें ड्यूटेरियम इज एक्टिव इन न्यूक्लियाई और इनएक्टिव न्यूक्लियाई एब्सोल्युटली ड्यूटेरियम इज inactive nuclei. Okay, and that is why we are using all these solvents. Okay, if they ask you a question which is regarding solvent, then you should be able to answerable. Now क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये हम बोल सकते हैं, बट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये कोई भी नहीं बोल सकता एक्सेप्ट पेपर सेटर, एंड पेपर सेटर तो आपको खुद से बोलेंगे नहीं।
चलिए अब इसके बाद में बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, एंड that point is about simply chemical shift. What is mean by chemical shift from our syllabus, which is the important point? Okay, up to this, any questions, guys? If you have, you can. I think consolers, up to this, do you have any question?